Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम आज से शुरू होने वाले नेटो जो समिट हो रहा है लिथुआनिया के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, नेटो के समिट के ऊपर हम दो एपिसोड में बात करेंगे। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस नेटोज़ क्रूशल समिट देयर हैज़ बीन डिविजन्स विद इन नेटो, और ये नेटो समिट जिस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के वाले से हम बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। एंड द नेक्स्ट एपिसोड ऑन द कमिंग फ्राइडे वुड बी ऑन व्हाट वर द डिसीजंस टेकन बाय द नेटो समिट, जो कि अगले 2 दिनों में डिसाइड किया जाएगा, एंड द पॉसिबल रिप्रिकॉशंस ऑफ दोज डिसीजंस, दोज डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ नेटो एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन, आज की बात करेंगे। आज से शुरू हुआ, जो ट्यूसडे है आज, तो आज की डिस्कशन शुरू हुई। नेटो का समिट स्टार्ट हुआ लिथुआनिया के अंदर, जिसके अंदर जो नेटो के 31 स्टेट्स हैं उनकी जो हेड्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, दे आर मीटिंग इन लिथुआनिया टुडे। इस मीटिंग के अंदर जो नोटवर्दी लीडर्स शामिल हैं उनमें जो बाइडन शामिल हैं, उसके अलावा हम देखेंगे टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दवान, वो शामिल हैं। और ये जो समिट है इट विल बी लास्टिंग फॉर 2 days। ये समिट नाज़रीन एक बहुत क्रूशल टाइम पे हो रहा है। दिस इज़ अ टाइम जब नेटो को बहुत सारे इश्यूज़ का सामना है, यूरोप को बहुत सारे इश्यूज़ का सामना है। उनमें से अगर मैं की इश्यूज़ की बात करूं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ यूक्रेन्स काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, एंड यूक्रेन इज़ क्लेमिंग कि इट इज़ गेनिंग एडवांसेस ऑन ग्राउंड। और इसी तरीके से हम देखेंगे इससे आज से कुछ हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले हमने देखा कि रशिया के अंदर जो है वो एक म्यूटिनी स्टार्ट हुई वैगनर ग्रुप की तरफ से जाके। ऑल्दो इट इज़ सेटल्ड, लेकिन स्टिल दिस क्रूशियल समिट इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस दैट डेवलपमेंट। बिसाइड्स दैट हम ये भी देख रहे हैं कि देयर इज़ अ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन टर्की एंड इट्स नेटो अलाइज, मेनली बिकॉज ऑफ टर्कीज अपोजिशन टू स्वीडन्स मेंबरशिप इन टू दी नेटो अलायंस। बिसाइड्स दैट हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों से, ऑब्वियसली फॉर ईयर्स बट पर्टिकुलरली पिछले कुछ दिनों से हमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी नज़र आई जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से फॉर एक्सपेडाइटिंग द यूक्रेन्स प्रोसेस ऑफ गेनिंग नेटोज़ मेंबरशिप। एडिशनली हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ही मेड अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ सेंडिंग द क्लस्टर बॉम्ब्स और क्लस्टर munitions फॉर यूक्रेन इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट द रशियंस। ये सारी जो डेवलपमेंट है नाजरीन, ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं पे नेटो अलाइंसेस को, यूरोपियंस को, इंट्रा यूरोपियन अलायंस को और जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है उसके अंदर एक डिवाइसिव फैक्टर्स का रोल प्ले कर रही हैं। सो हम आज के इस एपिसोड में इन्हीं जो 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं, एक स्वीडन्स मेंबरशिप और जो टर्की के वजह से इश्यूज चल रहे हैं, दूसरा जो यूक्रेन की बिड है टू गेट द नेटो मेंबरशिप, और तीसरा जो बाइडन का डिसीजन है टू सेंड दी क्लस्टर बॉम्ब्स टू यूक्रेन। इन 3 डेवलपमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये इश्यूज़ हैं क्या एंड हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिविजन्स विद इन नेटो, विद इन द यूरोपियन अलायंस एंड विद इन द ट्रांस अटलांटिक नेटो अलायंस। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो स्वीडन की मेंबरशिप का इशू है नेटो के अंदर। नाज़रीन, लास्ट ईयर फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों ने अप्लाई किया था नेटो की मेंबरशिप के लिए, लेकिन हमने देखा कि फिनलैंड गॉट इट्स मेंबरशिप दिस ईयर 4 अप्रैल को, जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया नेटो के एक्सपेंशन के ऊपर और पर्टिकुलरली फिनलैंड के ज्वाइन करने के हवाले से। बट उसके साथ हमने देखा कि जो स्वीडन की बिड है दैट वाज डिलेड मेनली बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द 2 स्टेट्स। द मोस्ट वन वाज फ्रॉम टर्की, बट हंगरी इज़ ऑल्सो अपोजिंग नेटोज़ मेंबरशिप। एंड नाज़रीन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो नेटो के 31 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो क्राइटेरिया है टू गेट मेंबरशिप दैट इज़ द यूनानिमिटी। नेटो टेक्स डिसीजन यूनानिमसली, एनी वन स्टेट कैन वीटो द डिसीजंस ऑफ द अदर्स। So as long as Hungary and Turkey oppose, Sweden cannot become the member of NATO. टर्किश की अगर हम फैक्टर की बात करें तो टर्की की जो मेजर डिमांड थी दैट वाज द फैक्ट दैट टर्की हैज़ बीन ब्लेमिंग स्वीडन that Sweden hosts or gives kind of protection to or allows the freedom of operations to what Turkey calls a terrorist group that we call Kurdistan Workers Party or PKK. नाज़रीन, जो टर्की है वो इस ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर देखता है, लेकिन यूरोपियंस इसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं देखते। दे कॉल इट अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। टर्की हैड डिमांडेड दैट स्वीडन शुड एक्ट अगेंस्ट दोज पीकेके एक्टिविस्ट, और उस हवाले से हमने देखा कि कुछ पीकेके जो एक्टिविस्ट हैं उनकी एक लिस्ट दी गई स्वीडन की गवर्नमेंट को। और सिंस देन, जब से लास्ट ईयर से टर्की ने ऑब्जेक्शन रेज किए, देयर हैव बीन सम डेवलपमेंट्स। कुछ लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया गया,
कुछ लोग जो कि स्वीडिश नेशनल हैं जिनको एक्सट्राडाइट नहीं किया जा सकता एज पर द स्वीडिश लॉ, उनको जो है वो स्वीडन के अंदर ही उनके ऊपर ट्रायल हो रहा है, और कुछ के ऊपर जो है वो स्वीडन इज़ रिलक्टेंट टू टेक एनी एक्शन. सो देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, एंड इट वाज बिलीव्ड कि जो ये समिट है, लाइकली इस समिट में या सून आफ्टरवर्ड्स द स्वीडन विल जॉइन नेटो. हाउएवर yesterday हमने एक सरप्राइज डेवलपमेंट देखी. बिफोर डिपार्चिंग फॉर लिथुआनिया टू पार्टिसिपेट इन द नेटो समिट, तैयब अर्दोगान साहब मेड अनदर डिमांड, अ सरप्राइजिंग डिमांड. उन्होंने डिमांड ये की कि जो स्वीडन है उसकी मेंबरशिप नेटो के लिए, इट इज़ नेसेसरी दैट टर्की शुड बी अलाउड टू रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन. आसान लफ्ज़ों में, नेटोज़ मेंबरशिप, स्वीडन्स मेंबरशिप ऑफ नेटो इज़ लिंक्ड विद टर्कीज़ मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन. Although this demand was never put forward before, at least not in public. और हमने देखा कि इसी वाले से जब ये स्टेटमेंट आई तैयब अर्दोगान की तरफ से, some of the NATO members have reacted to that. हमने जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स की स्टेटमेंट देखी. उन्होंने कहा कि this thing is these two demands are totally unrelated issues. European Union membership is a separate issue, although almost all of the NATO members are the European Union part, except for Britain and some others. But although these organizations overlap with each other, but these two organizations work independently, their membership criteria are different, and therefore we cannot allow the Turkey to link the NATO's membership of Sweden with Turkey's bid to get the European Union membership. यहाँ नाज़रीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस 2005 टर्की और यूरोपियन यूनियन के जो डायलॉग है ऑन EU membership, they have been stalled. Although Turkey has been aspirant to get the EU membership for almost last 50 years, but there is no there is no prospect of this in sight as such because of various issues जो एक अलग प्रोग्राम वारंट करते हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे. So this unprecedented demand has been met with opposition from the Germany. और साथ हमने देखा कि जो outgoing NATO चीफ हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी इस बात को कहा that this is not right to link the Turkey's EU membership with the NATO, because these again the same logic is there, because they are two separate organizations and have their own frames of reference. Besides that, नाज़रीन, एक और स्कॉलर्स की तरफ से कहा जाता है कि वन ऑफ द अनदर रीज़न वाई टर्की इज़ अपोजिंग स्वीडन इज़ बिकॉज ऑफ द US reluctant टू सेल टर्की द F-16s. और उस हवाले से हमने देखा कि US की एक अपनी पोजीशन है. US हैज़ बीन रिलक्टेंट फॉर वेरियस रीजन, जिस पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे. बट रिसेंटली हमने देखा कि जो बाइडन हैज़ मेड सम काइंड ऑफ different statements. He had been saying that he is willing to sell F-16 to Turkey, but the problem is that Congress has a veto power, and in fact there is likelihood कि हमें US का जो stance है F-16 के ऊपर वो थोड़ा soft होता हुआ नजर आता है, and that element has been kind of gradually disappearing as a reason why Turkey has been blocking the Sweden membership. But जैसा मैंने पहले कहा कि Kurdish element जो है वो भी Sweden has acted on that. Americans have shown some kind of flexibility on Turkey's demand of F-16, but the new surprise demand from Tayyip Erdogan has been surprising, and let's see how this NATO alliance and NATO summit reacts to that. क्या तैयब अर्दोगान साहब इस कलेक्टिव जो प्रेशर होगा, ये जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है स्वीडन के मेंबरशिप के वाले से, एक्सेप्ट की ऑलमोस्ट एवरीबडी एग्रीज, वो किस तरीके से फेस करते हैं, एंड हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट. दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी सीन इन दिस समिट. Second major issue that divides, that creates division within this alliance before the start of the summit is the issue of Ukraine's bid to get the membership and to expedite the process of getting membership into NATO. हमने देखा नाज़रीन कि this Ukraine's bid to get NATO membership has been at the heart of why the Russians have invaded Ukraine in the first place last year on 24th of February 2022. This Ukraine's membership of NATO has always been a contentious issue. It was believed historically that NATO will join Ukraine will join NATO, but not anytime soon. And there was no possibility of short-term, possibility that Ukraine would get NATO membership. But despite that, हमने देखा कि Russia ने invade किया, और since Russian invasion, the Ukrainians have now officially applied for NATO's membership. But it was believed by scholars that it's a long shot, because Ukraine has to fulfill the minimum requirements to get NATO's membership. इस कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हमने देखा कि कल जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आई नेटो के ऑफिशियल की तरफ से, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट इन द सेंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम नेटो अलायंस हैज़ शोन सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन यूक्रेन गेटिंग मेंबरशिप ऑफ द नेटो. और वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है नाज़रीन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो यूक्रेन के ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा दैट जो एलाइज हैं दे हैव एग्रीड टू ड्रॉप द रिक्वायरमेंट दैट कीव कंप्लीट्स अ मेंबरशिप एक्शन प्लान, a kind of roadmap for military reforms that some members have to have before they could join NATO.
ये डिमांड का जो ड्रॉप होना है, दिस इज समथिंग दैट इज फॉर सम स्कॉलर्स अ की कंसेशन गिवन टू कीव in this summit or before the start of the summit, and this could be a clearly warning shot for the Russians as well. Which it doesn't mean that Ukraine will immediately get the membership, but it does mean that the Ukraine has taken multiple leaps forward in joining the NATO membership. Still, the issue is that Kyiv wants a particular deadline, a particular time frame for Ukraine's membership of NATO, although Joe Biden, the Americans, the Germans, they are reluctant to give any time frame for Ukraine joining the NATO. Eastern European states have been pushing for giving a particular fixed time frame for Ukraine's membership of NATO. This is something that is a contentious issue and has been dividing has been a dividing factor among the NATO members. Let's see नाज़रीन इस समिट के अंदर इसके हवाले से भी क्या डेवलपमेंट होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेजर डिवाइसिव फैक्टर है, दैट इज जिस तरह मैंने कहा नाज़रीन, दैट बाइडन हैज़ अनाउंस्ड जस्ट बिफोर अराइवल टू लिथुआनिया, हमने देखा कि उन्होंने अनाउंस किया कि दैट यूएस इज गोइंग टू सेंड द cluster munitions, cluster bombs to Ukraine. This is something that is critical because almost two-thirds of NATO's members have banned cluster bombs, and they have categorically and clearly rejected Ukraine's demand of cluster bombs, merely on the premises that these bombs are something that remain unexploded. There's a possibility of being unexploded, and they can kill civilians, and they can explode even after the decades when the war ends. तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस विद द क्लस्टर बॉम्ब्स, मोस्ट ऑफ नेटो मेंबर्स आर वेरी क्रिटिकल टू हैविंग दोज वेपन्स, लेट अलोन सेलिंग इट फॉर अ बैटल फील्ड वॉरफेयर states. So Biden की तरफ से ये जो डिसीजन है, दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज नॉट बाय जस्ट द यूरोपियंस but also by some of the Americans from inside America. This is something that Biden has to be answerable about while he is participating in NATO summit. Let's see, Nazreen, that Biden, is he able to convince other Europeans on this front or not? This has to be seen in this summit. So to conclude, Nazreen, हम कह सकते हैं that this summit is very, very crucial. It is crucial for many reasons. In fact, NATO is a very, very important at a very important juncture of its time when the war is on its peak in Ukraine. It is a make or a break offensive on the part of Ukraine, and it also is a resolve on the part of NATO to stay united in the face of the emerging challenges, particularly the challenges coming from Russia. And Nazreen, this summit is different from the previous summit because the last summit was a time when हमने देखा कि नेटो के अंदर एक यूनिटी क्रिएट हुई अबाउट फिनलैंड, और हमने देखा कि नेटो जो है 2022 के अंदर हमें एक जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है वो एक उस पर यूनिमिटी आती हुई नजर आती है, जिसमें चाइना फैक्टर को बड़ा हाईलाइट किया गया. दिस समिट इज लाइकली टू बी डिफरेंट. इट माइट हैव अ पासिंग रिमार्क्स ऑन चाइना, वी हैव टू सी ऑन दैट, बट द मेन फैक्टर under discussion in NATO would be a united front on the issues that I have discussed earlier. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.